Very good evening, everyone. My name is Rita D'Souza. I am a mind coach and I help people uplift their spirit and look at life feeling good and positive. The topic of discussion for this evening is Closing Cycles by Paulo Coehlo. One has to always know when a stage comes to an end. And if we insist on staying longer than the necessary time, we lose the happiness and the meaning of the other stages we have to go through. Closing cycles, shutting doors, and ending chapters, whatever name we give it, what matters is to leave it in the past, the moments of life that we have finished. Did you lose your job? Or has a loving relationship come to an end? Did you leave your parents' house? Or have you gone abroad? Or has a long-lasting friendship finished and just ended out of the blue? You can spend a lot of time wondering why this has happened. You can tell yourself that you won't take another step until you find out why certain things that were so important and so solid in your life have turned to dust, just like that. But such an attitude will be awfully stressing for everyone involved, your parents, your spouse, your friends, your children, your siblings as well. Everyone is finishing chapters, turning over new leaves, and getting on with life. And they will feel bad for seeing you at a standstill. Things pass, and the best we can do is let them really go away. That is why it is so important, however painful it may be, to destroy souvenirs. Move, give lots of things to the orphanages, sell or donate the books that you have at your home. Everything in this visible world is a manifestation of the invisible world, or what is going on in our hearts. And getting rid of certain memories also means making some room for other memories to take their place. Let things go. Release them. Detach yourself from them. Nobody plays this life with marked cards. So sometimes we win and sometimes we lose. Do not expect anything in return. Do not expect your efforts to be appreciated, your genius to be discovered, or your love to be understood. Stop turning on your emotional television to watch the same program over and over again. The one that shows you how much you suffered from a certain loss. That is only poisoning you, nothing else. Nothing is more dangerous than not accepting loving relationships that are broken off. Work that is promised, but there is no starting date. Decisions that always put off waiting for the ideal moment. Before a new chapter is begun, the old one has to be finished. Tell yourself that what has passed will never come back. Remember, there was a time when you could live without that thing or that person. Nothing
is irreplaceable. A habit is not a need. This may sound so obvious. It may even be difficult, but it is very important. Closing cycle, not because of pride or incapacity or arrogance, but simply because it no longer fits your life. Shut the door, change the record, clean the house, shake off the dust. Stop being who you were and change into who you are. I really love this, written by Paulo Coehlo. And each time I read it, I receive a new perspective. I have some thought-provoking questions I would like you all to ponder upon. I do not need answers. We think for ourselves where we are, where we were, and where we want to be. Number one, reflect on a recent life change. What is a significant chapter in your life that you feel needs closing? What steps can you take to move forward? Second is on emotional detachment. How do you handle emotional attachments to past experiences? And what strategies can help you let go? The next is learning from loss. What have you learned from past losses or endings, and how they have shaped your current perspective? The next is embracing new beginnings. How do you prepare yourself mentally and emotionally for new beginnings after closing a chapter? And the last one, self-identity and change. In what ways do you think closing cycles can help you evolve into the person you want to become? For those of you who would like to contact me, you can do so via Instagram. My ID is Your Mind Mastery. You are mind, MIND, mastery, MASTERY. Thank you very much for giving me an opportunity to talk to you and share my thoughts as well as those thought-provoking questions. If any of you would like to share your experience of the meditation or the question that I have asked you all, please, you may do so. नमस्ते। नमस्ते। आप हेलो। हिंदी समझती हैं? हाँ, हेलो। मैं भी हिंदी में बात कर सकती हूँ। अब यस, बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? मुझे मेडिटेशन के बाद तो बहुत अच्छा फील होता है। तकरीबन मैं अवॉइड करती हूँ आपकी क्लास लेते हुए, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती है। कोशिश करती रहती हूँ, आ जाएगी आ जाएगी, ऑफ कोर्स। लेकिन आज कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नई शुरुआत करने से पहले पहले चैप्टर को बंद करना होता है। बंद और ही करना पड़ेगा, बंद ही आपको मे, करना है। मेरा चैप्टर बंद ही नहीं हो रहा है। पास्ट वाला बहुत ज्यादा चलता है। मेडिटेशन करते हुए भी ऐसा लगता है मैं थक जाती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है उसी चीजों में घुसी हुई हूँ जो पहले मेरे साथ हुई हैं। जी, सही ये समझी हूँ मैं? सही, आपने सही, यू हैव रियली अंडरस्टूड इट वेल।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, जब तक हम लोग ये सब को बंद नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट इज अ चैलेंज। लेकिन हम चलो, लोग ये समझना है दैट दिस इज अ टेम्पररी चैलेंज, और कुछ भी करके हमें आगे ही बढ़ना है। जितना हम लोग भूतकाल में रहेंगे उसमें हमारा ही नुकसान है। भूतकाल में कुछ पड़ी नहीं है। The future is more important and your present. What are you doing? मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। Because थैंक हाँ, यू, थैंक यू। और एक चीज है, अ, हम लोग बहुत टाइम से जरा एक दूसरे को हम लोग दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, जरा उसकी वजह से मेरी ये हालत है। उससे सिचुएशन तो फिर बदली तो नहीं होती है। बिल्कुल। हमारा ही जो मन का जो स्थिति है और भी नीचे गिर जाती है। उसको जो करना था तो उसने कर लिया, चल बसे निकल गए। हम लोग वो बॉम्बिट जैसा लेकर हम लोग जी रहे हैं। नुकसान हमारा है, और ये सिर्फ आपका ही तकलीफ नहीं है। वी आर ऑल गोइंग थ्रू दिस। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग सुपर के ऊपर में है, कोई नहीं है। बट वी ट्राई विथ एवरी पासिंग डे। हर एक दिन मैं क्या बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, वो मेरी डिसीजन है, मेरा चॉइस है। यू अंडरस्टैंड? यस। मैं मैं हिंदी मेरा मेरा हिंदी थोड़ा मैं इंटरनेशनल है, बट मैं आप एक सब। बात आपसे शेयर करूंगी अपनी। रिसेंटली नवरात्रि के दिनों में हाँ हाँ। डॉक्टर शैला अलवी पाकिस्तान में जो मेडिटेशन कराती हैं, हाँ जी। उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के आप व्रत रख सकती हो तो बहुत अच्छा है, आप रख के देखो, ट्राई करो। तो ऑलराइट। मैंने पूरी लाइफ में, मैं 48 की हो चुकी हूँ, मेरी अभी एज ये है, मैंने कभी ओके। एक सिंगल व्रत नहीं रखा है। हम्म। तो मेरे मन में आया कि मेरा बीपी भी लो हो जाता है, शुगर भी लो हो जाता है, मैं कैसे रखूंगी। और इतना वो बोल रही है सिर्फ पानी पियो और दो सब्जियों का जूस पियो निकाल के, ठीक है। फिर मेरे माइंड ने कहा ये शायद मेरा माइंड ही मुझसे खेल रहा है, और मैं कर हम्म। सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जब मैंने वो चीज 9 दिन कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, सिर्फ पहले दिन मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मुझे लगा कि मैं देखो कैसे कर लिया, तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे क्यों लगता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। तो आज भी जब मैं पहले तो मुझे एंजाइटी होती थी बहुत कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे ये हम्म। ज्वाइन करूँ। अब उस चीज से भी निकली हूँ, मैं हद से ज्यादा डरी हुई और एंजाइटी में होती थी कि मैं इन लोगों की कैसे, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगी, मैं करती भी नहीं थी, आगे चलती भी नहीं थी उसके पीछे। जब मैंने एक दफा यूनिवर्स से प्रे किया था, दिल से बैठ के, उसके बाद ये चीजें मेरे आगे आती गई है, पता ही नहीं चला कैसे ये सब हुआ है, या। यूनिवर्स कैसे काम करता है। आज मुझे हद से ज्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा था, इरिटेशन थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये क्लास ले लेती हूँ, मुझे समझ में तो आता नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। और तब जाके हम्म। मैंने, आपकी पहले भी होती है, मैं लेती नहीं हूँ, मैंने बोला इतनी बड़बड़ इंग्लिश करती है, मुझे तो समझ में नहीं लेकिन आपको समझ में आया राइट जो मैंने बताया है? आता। सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम लोग का आदत है, गंदा आदत है दूसरों पे इल्जाम लगाने का। मुझ में है। सब में है, सब में है, ऐसा नहीं। मैं भी दूध से धुली नहीं हूं। बट हाउ मच इट इज सफरिंग, मेरा ही सफरिंग हो रहा है। जिसको करना था, जिसको सुनाना था, जिसको मेरा इंसल्ट करना था, किया है, निकल गई। मैं वो कटोरी लेकर घूम रही हूँ, मेरा ही नुकसान हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? यस। जो हम लोग बोलते हैं वॉमिट लेकर घूम रहे, मुझे ही बास हो रहा है। सामने वाला चला गया है, राइट? I hope this makes sense. But yeah, thank you for being a part of my meditation as well as the wisdom sharing. Okay, थैंक बहुत यू, अच्छा लगा थैंक आपसे बात करके। Thank you. आई लव यू एंड थैंक यू। Thank you. Thank you very much. Would anyone else like to share their comment?
Rita ma'am, Anu here. The meditation Hello. music was really like very too deep, like very soulful, like very soothing. So if you could just share this, that'll be great. So if even in time we could also meditate on this music. It's very, very soothing, soul Thank soothing. you. Thank you very much. I shall forward it to you as well. Yeah, and ma'am, just one question: that how we know that there's certain cycles to be closed, right, in our journey, but how do we like understand that this cycle needs to be closed or this is coming to an end? So, is it just when we meditate more, we just get that feeling, intuition, or like if somebody I mean, just goes to the next realm, um, that is fine, that we have to understand and absorb, but then in our journey also certain things come to an end and new beginnings get started. So how do we get to know or understand or realize, okay, this is something probably which is nearing an end, and we have to let go? So I practice something that I like to share with you. I was waiting to understand what you want to ask, and now I understood what you want to ask. What I do is most of the time, okay, if something is making you feel good, you maintain it, you keep it. If some thought, some person's behavior is making you feel good, you embrace it. You hold it in your heart with warmth, with love, with peace, with kindness, with harmony. Likewise, if somebody's behavior has made you frown, get you upset, wild, you are beginning to feel small of yourself. So you know you need to let go and shut that door, close the cycle. This is what I do. This is what I'm doing. And it's mm, not that I'm 100% reached there. There are times I fall down. There are some times when I'm already into a healing mode and I speak to mm, another client or another person who is going through a not so pleasant situation. Sometimes I drop, like I can also be going through the same all over again mm, because that wound is not thoroughly healed. mm. That's what I was speaking to. Yeah. Yeah, is that we need to know that unless we let go, we cannot move on. What Mm, people need to do, have done, they have done, and they've moved on. And for some odd mm, reason, many of us, somehow, for some odd reason, we have chosen to live with that bowl full of vomit. mm, It's stinking, it's dirty, it's not worth it. And we choose mm, to embrace it. mm, And we realize it's not worth it. So the lesson is to slowly and steadily reduce holding on. mm, People have done what they had to do as per their state of mind. mm. Right? Thank you. Yeah. And Yeah. Okay. Thank you, ma'am. yeah, my pleasure. That's about it. Would any of you wish to comment something? Say something? All right. It's been a pleasure talking to all of you. We shall meet tomorrow morning for the meditation as well as the wisdom sharing. I wish you all a restful evening. Stay blessed and stay beautiful. And if need be, close cycles. That is the only way, slowly and steadily, we can move on. Or else we are stuck, which is not worth it. Thank you. Cheers. Good day. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हाँ जी. कि मुझे आपसे सेल्फ लव के बारे में अच्छे से सीखना है कि हम खुद से अगर प्यार नहीं करते तो और किसी से कर ही नहीं सकते। सही बात है. तो हमने तो हमेशा यही किया है, खुद की कभी सुनी भी नहीं, कभी खुद के साथ बैठे भी नहीं थे। जब ये मेडिटेशन में बैठे हैं तब जाके लगा है
ये अपनी कभी सुनी नहीं, अब खुद से कभी पूछा ही नहीं, बचपन से यही सुना और यही किया कि दूसरों सही का है, या सही अपना। बात है। मे बी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट सोमवार को जब भी मेरा एक दूसरा सेशन रहेगा, आई स्पीक ऑन सेल्फ लव, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। Thank you. Take care. All right. Okay. Have a pleasant evening, all. Cheers.